Okay, now is the voice coming? Now is the voice coming? Please confirm. Now is the voice coming? Now is the voice. Yes, so the voice is coming. Okay, so let's repeat all the three question. बच्चा लोग जो तीनों क्वेश्चन अपन लोगों ने पढ़े, let's repeat them out. Okay, I hope this is pretty clear. Let's repeat them out. Okay, so am I audible once again? Had to fix a small glitch. Yes, I'll provide you. So which of the following is not the inversion of double slider crank chain? Obviously, pendulum mechanism. Pichla question, the Whitworth quick return motion mechanism is the inversion of a single slider crank chain. And we started with this question कि स्कोच योग मैकेनिज्म अपने को कैसे मिलता है? By fixing link 1 and link 3. Oldham's coupling is the inversion of Oldham's coupling is the inversion of double slider crank chain. Very easy. In a single slider crank chain, the formation of Whitworth quick return motion mechanism takes place when? बच्चा Whitworth quick return motion mechanism कब मिलता है? बच्चा in slider crank chain the formation of Whitworth quick return motion mechanism takes place when? कौन सी लिंक को फिक्स करोगे तब अपने को Whitworth quick return motion mechanism मिलेगा? सर when the smallest link or the crank is fixed. बट अगर कनेक्टिंग लिंक को फिक्स किया, आप लोगों ने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया, तो यू विल गेट द क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर टाइप क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म. आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर विथ यू. आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर विथ यू. वहां पे क्या मिलेगा अपने को? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर टाइप क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म व्हेन द कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, नॉट द स्मॉलेस्ट लिंक. स्मॉलेस्ट लिंक मतलब द क्रैंक इज फिक्स्ड. Okay, so that will be, you can say, the formation of Whitworth quick return motion mechanism. Sir, what is the total number of inversion possible for single slider crank mechanism? Total number of inversion possible for the single slider crank mechanism. Single slider crank mechanism के लिए कितने inversions possible है? वेंकी सिंगल स्लाइडर इट इज, तो 4 होने चाहिए ना. फॉर डबल स्लाइडर इट विल बी 3.
For single slider, first of all, it is your reciprocating engine or reciprocating compressor. Second inversion is your rotary या genome engine and Whitworth quick return motion mechanism जहां पे crank fix है. The third one is your crank and slotted lever type quick return motion mechanism and oscillating cylinder engine जहां पे your connecting link या connecting rod is fixed. And the fourth one is your hand pump when your slider is fixed. What is the possible minimum number of links required in a planar mechanism of single degree of freedom which have both higher and lower kinematic pair? Which have both higher and lower kinematic pair? बोलिए बच्चा. वेंकी वंस अगेन गलती. यहाँ पे मेंशन्ड है व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स व्हेन वी आर हैविंग बोथ हायर एंड लोअर पेयर. जब खाली लोअर पेयर होता तो इट वुड बी 4, बट यहाँ पे हायर पेयर और लोअर पेयर दोनों है तो इट वुड बी 3. अपन लोगों ने ये पढ़ा था, इट शुड बी 3. The mobility of a linkage, मतलब degree of freedom of a linkage can be determined by the help of, can be determined by the help of. Very easy, Grubler's criteria. Sir, the degree of freedom of a structure of a logged system is, the degree of freedom of a structure of a logged system is, very good. A superstructure has how many degree of freedom? Yes, a superstructure has a degree of freedom F is negative. Very good. So the mechanism which serves the purpose of dividing the periphery of a circular place into the number of equal parts is known as,
Very good, very good, very good. Indexing is a mechanism which serves the purpose of dividing the periphery of the circular plate होना चाहिए, ये place नहीं, into a number of equal parts, और जेनीवा mechanism यूज होता है. टॉगल मैकेनिज्म इज नॉट यूज्ड इन. टॉगल मैकेनिज्म कहां पे यूज नहीं होता है? इम्बोजिंग प्रेस, मैंने आप लोगों को एक वहां पे प्रेस के बारे में बताया था. इम्बोजिंग इज अ प्रेस वर्किंग ऑपरेशन. स्विचेस में टॉगल मैकेनिज्म इज यूज्ड, मैंने बताया था. स्टोन क्रशर्स में टॉगल मैकेनिज्म इज यूज्ड. वेंकी, इट इज नॉट यूज्ड फॉर गियर कटिंग. इट इज नॉट यूज्ड फॉर गियर कटिंग. बच्चा, इम्बोसिंग प्रेस में यू रिक्वायर वेरी 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 हाई मैकेनिकल वर्क. टॉगल मैकेनिज्म आप लोगों का इन्फिनाइट मैकेनिकल एडवांटेज देता है. या तो फोर्स आउटपुट इज वेरी 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 हाई देन द फोर्स इनपुट. Okay, for toggle mechanism your mechanical advantage is infinite. अब ये mechanical advantage infinite होने का मतलब क्या है? The force output is very 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 high than the force input. Okay, is this clear? So the mechanisms in which the number of links are 10, what will be the number of possible inversions in it? Sir, if there are n number of links, then possibly there are less than or equals to n number of inversion. Okay, a ball and socket joint is an example of that a ball and socket joint forms a spherical pair, three-dimensional motion. Which of the following link does not undergo any deformation while transmitting the motion? Which of the following link does not undergo any deformation while transmitting the motion? ऐसी कौन सी लिंक है जो बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होती while transmitting the required motion? ट्राई कीजिए.
rigid link. Which of the following link does not undergo any deformation while transmitting the motion? A point on a link connecting the double slider crank chain traces an straight line path, circular path, parabolic path, or elliptical path. क्या पाथ ट्रेस करेगी लिंक? elliptical path. Elliptical path. Try this out now. ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन आ गया. A slider sliding at 10 centimeter per second on a link which is rotating at 60 rpm is subjected to Coriolis acceleration of magnitude in centimeter. It should be centimeter per second square. टू बी ओमेगा. Okay, is this clear? बोलिए बच्चा लोग. Sir, given figure shows a quick return motion mechanism. Crank OA rotates clockwise uniformly. OA की लेंथ है आप लोगों की 2 सेंटीमीटर. O से O डैश का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर. द रेशियो ऑफ टाइम फॉरवर्ड टू दैट ऑफ रिटर्न मोशन इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द फॉरवर्ड मोशन टू दैट ऑफ द रिटर्न मोशन. बच्चा एसएससी जेई का क्वेश्चन है. एसएससी जेई में ये प्रश्न आया है. Okay, this point is O. This is O dash. तो बच्चा यहां पे आप लोगों को यह समझना है
ओके, ये देख रहे हो आप लोग। सो यहाँ पे वी हैव टू टेक द स्पेसिफिक पोजीशन। सो इन दिस केस ये जो एंगल होगा, this will be your return stroke angle alpha, this will be your forward stroke angle beta। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि अगर आप लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, इतना पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला, कैन यू सी दिस? ओके, इफ वी कंसीडर दिस मच ट्राइंगल, अगर अपन लोग इतना ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ओके, सो व्हाट विल बी द केस, ये 90 डिग्री होगा एंड दिस एंगल विल बिकम अल्फा बाय 2। सो यहां से अपन लोग ये बोलेंगे कॉस अल्फा बाय 2, अगर ये ओ डैश है और ये ए है, तो cos alpha by 2 will always be equals to your, some people have curly brown hair, ये base upon hypotenuse, this line is the biggest, so base मतलब OA upon OO dash, तो cos alpha by 2 which is your equals to OA का distance है आप लोगों का 2 and ये हो जाएगा by 4 that is 1 by 2। so cos alpha by 2 is equals to 1 by 2, तो alpha by 2 कितना होगा, cos inverse 1 by 2। सो ये हो जाएगा 120 डिग्री, अल्फा ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री इंटू 2, सो दिस विल बी, इज दिस क्लियर? सो नाउ फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न स्ट्रोक का टाइम विच इज बीटा अपॉन अल्फा। ओके, अगर अल्फा 120 है तो बीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी 360 माइनस अल्फा। So the answer is option number B, सही है। बोलिए। Dash cannot be classified as the inversion of single slider crank mechanism।
तो यहां पे देखा जाए तो इलिप्टिकल ट्रेमल is not the inversion of single slider crank chain. Is this clear? Sir, Coriolis component of acceleration here is present whenever a point moves along the path that has what type of acceleration? The answer is rotational motion. The answer is rotational motion. The instantaneous center of a body rolling with sliding or a stationary curved surface is rolling with sliding. Instantaneous center of a body rolling with sliding on a stationary curved surface is at the center of curvature of the surface. Is at the center of curvature of surface या common normal. Sir, it is on the common normal at the point of contact. It is at the common normal at the point of contact. ये बताया था. Sir, रोलर बेरिंग जो है वो आप लोगों का कौन से टाइप का पेयर है? Roller bearing is an example of higher pair. Sir, one of the mechanism is not an exact straight line motion mechanism. सर, यहां पे आप लोगों को दो चीजें देखनी है. ओके, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म. तो सबसे पहले आप लोगों का आता है हार्ट्स मैकेनिज्म. उसके बाद फ्यूसिलियर्स मैकेनिज्म. एंड स्कॉट रसल मैकेनिज्म.
सर अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म में कौन से आते हैं? अप्रोक्सीमेट में आता है आप लोगों का व्हाट्स मैकेनिज्म, फिर आप लोगों का व्हाट्स के बाद आप लोगों का ग्रास हॉपर मैकेनिज्म, एंड द थर्ड वन इज चेबीचेफ मैकेनिज्म। ओके, ई साइलेंट है उसमें। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जैक्ट, दैट मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेट, इट इज ग्रास ऑफ मैकेनिज्म। ओके, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सो बच्चा लोग अगर मजा आया हो तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन एन अकेडमी प्लस। Using my code Vaidya10, you will get the access to the SSC JE and DRDO CEPTAM batch. Both Vaidya10 कोड यूज कीजिए, SSC JE लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस मिलेगा आप लोगों को, यूपीपीसीएल बैच फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड अनअकैडमी लाइट our very own test series using my code Vaidya10. So चलिए then, thank you everyone.